सबसे पहले हम पेपर को पानी से गीला करेंगे। उसके बाद हम वेट पेपर पर ही ब्लू कलर अप्लाई करेंगे और शेड देंगे। वेट पेपर पर ही हम कलर्स के शेड डालते जाएंगे। पहले ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लैक का। ग्रीन को इस तरीके से देंगे कि ट्रीज का इफेक्ट आए और ब्लू को इस तरीके से कि बैकग्राउंड का इफेक्ट आए। Here we go.